shargasha shazda bes bidi usyong nga golo jabes yana ngas de se makh mabia fansiat yana ngas ka thala tan skuret jiktu yana ngala sman la khang o seidana ga rgos lezenna yana ngala bazarinu ngadang si ka tha ta fbia usyong yana ngas sismat bes fansia fbia usyo سر لحمل سمياتا سي لن مفوض إذا رمشون لبرغامنو ياستو كيتشك يا بسم الله بلبل مدو قلنا بخادي محمد حق بكي توحيد باغي جهالات سيايو تربير سے زلالات سپايو شربير سے سدينم لانسيو ملما يبوسپو دجالا شرنا كان راجا پسپو हिदायत मोशर की खबर पो कले तंग से दोनों तनो से सहर पो दरजा पो मुझे चाला दरों में शुक्र में दे पारिज के छल नगों में बुद्धि जंग साजों अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दुखों संग से यो दर कुल हुअल्लाह कुछ दिखार जन पमद कनन अहद चंगे खादों बमद कन को समद कोई तो गुलाम यालिद सो कालम से वलम योला तखांग यांग सोलम से के जस कुन इन के तो कान काल से ने निस जस कुन इन से तो कान काल से ने खुदा में जगन दून थन गुना सो हम नया मर्द जन देवातो इंदने जल्लो लाते सोवेलो बोला मदनीना इलाके कोई नज़े मिजियो तो जरबो मिजियो दे गुना मिजियो तो पोशाक तमयन लस्कर दे दने को चरे चोमो निरन में जिसो जरे शदी सन मोनियन में तो होती समय को लाजवाली मिसाल चंसाली तो दे मिसाली तनूर तो गुजर नरे नूर दन चुगद खो माना जोदी ओतपो मन चुगद खो कोई दो लोगों को ना बाबा ये दे दानी में जिसों में दजर बना क्यों रोशनी में हमारे ईमान की बिजो चालो सो कले में हक अली नागो भुतो गोसो ये दो लोगों को तो नजर बनायागे बमोसा तो निदाय लंतरानी
करीने रंग बना जब से दोबारा यरे युद्ध लोग पोषण बारे इलाहा परे नूर तोरे रेखा बरबत हो कलीला का मजुद पासा तुझे पो program in the Shabu Radio Pakistan SKardu deban FM 93 na ida mission sis nabinet program pola Facebook i rostari snab se stude ngala frin kun karata sat Ismail Ustad Faposi idi anchan aju thermo ni Ismail Ustad khudayang rgango rana yashik yasi program pola snab se ngadia faskat pona argaluk yedbet berstakhman ngeren meshe yasi ire film po Facebook rostari ngala thunjux program po malegi mashallah wonit malegi lihmu wonit zare remashong diring ngati tamsil po ya wari ngati las khuriluk kunin pa gwana ngada jawabinit pa jagat matha sam pola osung smine makhrin ngala magwa ngada simabya kan thala tanit osung na nuqsana ngonit devi ilawa domain masangire meshong yana ngastara dana ngatiaba gilas kunsa mine ta iyol banyongosung osung khasa iyolenit masa tam bobikha gwana yana ngasi dosodi wala tale dana na ngadal gos firgoshas kun rin kun sispu tam seyar thalenit jak pajak mangai gwenit donar golbala di mangai nor golbala di cheez kuni sisu bi rin kun sisung thalba rin kun thalba donar golbala ya na ngala de zahmat ashisi ngadana shadabis petpi ya zdamat cheez kuni makh rin bese yona hushar ba gosat ya na ngasi gilas serchik bazarinu ya na ngasi tsona zaman di wala ya na ngala mul jibgawat sum gerdeawat ose pavi yana ngasido gasha chogor baji pukse gashe bese nimata se skam chukse skambo ke gora cholo janna yana ngala mul sum gerde thabat jodon di mangaina di cheez ko ni sesi de rin kun thalbet boda rgol bala yana ngala ngati cheez ko ni makhrin qadri bi agosat programi chasinu yastot khichik ye bismillah disabe pai khanga chamano olu tusi murtazaye na dunya na akhirat ni ngariya subab nasaman dunya na akhirat ni ngariya subab nasaman ali khona zarrat kiya tuna akalaye program bola snabe se ngel findaset inayat alisi karachina ide anjan aju thermo mire nesho during programming waqfo ekhne shamsanos muhammad dilshalay dasi program mendosar chamjugwet bi idin shadavyas tenchi daren idasi radio pakistan hikana khabar kulas navyas hadiyamayet idang programminu namesa yimbo shakhse
itir gashar fengul ngala thonje poitpi. $1600 Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan News read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister has underlined the need for exploring new avenues of collaboration between Pakistan and Iran. The Senate was informed today that the government has revived the work on the China-Pakistan economic corridor with speed. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the National Conference says the Modi-led Indian government is responsible for the worsening situation in the territory. The United Nations Secretary General has warned that consequences of Russia's invasion of Ukraine are worsening, affecting 1.6 billion people. And now the news in detail. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif has underlined the need for tapping the vast potential in areas of trade and economic cooperation and exploring new avenues of collaboration between Pakistan and Iran. He was talking to the Iranian ambassador Sayyid Ali Mohammad Hosseini, who called on him in Islamabad today. The Prime Minister also emphasized on early finalization of Polan Gavadir project that would provide additional electricity of 100 megawatt from Iran to Pakistan. In the regional context, Mohammad Shahbaz Sharif conveyed gratitude for Iran's consistent support on the issue of Kashmir, especially by the Supreme Leader, highlighting the precarious humanitarian and economic situation in Afghanistan. The Prime Minister underlined that the people of Afghanistan should be provided access to frozen assets. He appreciated close coordination between the two countries on the situation in Afghanistan. The Senate was informed today that the government has revived work on the China-Pakistan economic corridor with speed, and the long-term plan is being translated into an implementation matrix. Responding to a question during the question hour in the House today, the Minister for Board of Investment, Chaudhry Salik, said joint working groups are being convened to pave the way for the 11th Joint Cooperation Committee meeting. The President, Dr. Arif Alvi, has approved to confer Tamgha Imtiaz posthumously to 3 Chinese teachers killed in a terrorist attack in Karachi on the 26th of April. The award has been conferred in recognition of their services for strengthening Pakistan-China relations and promotion of relations in the field of education and culture. Renowned politician, anchor, host and religious scholar MNA Dr. Amir Liaquat Hussain died in Karachi after deterioration of health. He was 51. His driver found him in critical condition at home and took him to the hospital with the help of the police, where he was pronounced dead. Meanwhile, the police says it will investigate the matter to ascertain the cause of the death. President Dr. Arif Alvi and Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif have expressed grief and sorrow over the death of MNA Amir Liaquat Hussain. Commiserating with the bereaved family, they prayed for the departed soul. Pakistan's High Commissioner to Canada, Zahid Janjua, presented credentials to the Canadian Governor-General, Mary Jeannie May Simon, at Ottawa's historical Rideau Hall. Speaking on the occasion, the High Commissioner said his priorities include further strengthening bilateral ties between the two countries and serving the vibrant Pakistani diaspora in Canada. In the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, the National Conference President Farooq Abdullah has said the Narendra Modi-led Indian government is responsible for the worsening situation in the territory. Addressing a meeting of party workers and functionaries in Hazrat Bal area of Srinagar, Farooq Abdullah said the consequences of August 5, 2019 move of the Modi government can only be judged by looking at the depths of torments faced by the people of the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir on every front. The United Nations Secretary General Antonio Guterres says consequences of Russia's invasion of Ukraine are worsening, affecting 1.6 billion people.
Presenting the United Nations second report on the repercussions of the conflicts in New York, he said the war's impact on food security, energy and finance is systemic, severe and speeding up. Cricket. The second one-day international of the three-match series between Pakistan and the West Indies will be played in Multan tomorrow. The match will start at 1600 hours. Pakistan lead the series 1-0. And that is the end of this news bulletin. For more news and analyses, log on to our website radio.gov.pk. मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज पर ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। सामीन, मैं हूं आपकी मेजबान सना रफीक। इस वक्त हमारे स्टूडियो से घड़ी के मुताबिक 4:05 हुआ चाहते हैं। आइए सुनते हैं मुंतखब नगमे। के साया साथ रहूंगा हरदम तेरे पीछे, हरदम तेरे पीछे। आँख में चोली खेल है ऐसा, एक छुपे एक ढूंढे, एक छुपे चोली खेल है ऐसा, एक छुपे एक ढूंढे, एक छुपे छुपेगी कैसे, तेरा मेरा ऐसा नाता, फूल और खुशबू जैसे, जैसे नदियाँ और
किनारा जैसे नदिया और किनारा जैसे चंदा और सितारा एक दूजे की सूरत देख के हम दोनों हैं जीते, हम दोनों हैं जीते। आँख मिचोली खेल है ऐसा एक छुपे एक ढूंढे एक छुपे एक छुपे एक ढूंढे एक छुपे। अब वो बहारें कहाँ है दिल, अब वो बहारें कहाँ पड़ गए भीगे गीत खुशी के, अब वो बहारें कहाँ है दिल, अब वो बहारें कहाँ। लुट गए सारे ख्वाब हमारे, बुझ गए अपनी आस के तारे। लुट गए सारे ख्वाब हमारे, बुझ गए अपनी आस के तारे। हर तो और अंधेरा सुना है सारा जहान, सुना है सारा जहान पड़ गए भीगे गीत खुशी के, अब वो बहारें कहाँ है दिल, अब वो बहारें कहाँ। उजड़ गए हैं प्यार के मेले, देख रहे हैं आज अकेले। उजड़ गए हैं प्यार के मेले, देख रहे हैं आज अकेले। जिस बगिया में फूल खिले थे, उड़ती है रात वहाँ दिल, उड़ती है रात वहाँ दिल, उड़ती है रात वहाँ पड़ गए भीगे गीत खुशी के, अब वो बहारें कहाँ है दिल, अब वो बहारें कहाँ। मीडियम वेव्स 585 किलोहर्ट्ज पर ये रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद है। सामाइन आइए सुनते हैं कमर्शियल स्पॉट्स।
बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें। पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत न बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान। फसल को हर चा कर ले दे कुछ कमर अनास तापा फसल की दा गई जवाब निश्ता सर आज दे मुंगता हम आया दराज सा खबर अदा बस से फसल करो लो बवाख के नूर सोना सरो सरा दा FFC SOP हम इस्तेमालो हाँ आओ कना दा FFC SOP ज्यादा पैदावार सर सरा द फसलों खाइस और मयार हम खकई दा दुमरा हर सकई वाह जब हम उस दा FFC SOP इस्तेमालों बा सोना सरा हर जर्रा ज्वन रेशी SOP द FFC डीलरानो सरा मिलावीगी। ओ करमदीन आज